जोहार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पेपर 2 jpscpyq 2024। क्वेश्चन है, वन कानून के तहत संरक्षित वन से क्या तात्पर्य है? सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, सभी गतिविधियों के लिए अनुमति, उन सभी गतिविधियों पर रोक जिसकी अनुमति नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हम सही जवाब देखेंगे। तो इसका सही जवाब है उन सभी गतिविधियों पर रोक जिसकी अनुमति नहीं हो। प्रोहिबिशन ऑन ऑल एक्टिविटीज विच आर नॉट परमिटेड। तो इसका आंसर है, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है एक एरिया है, फॉरेस्ट लैंड और वेस्ट लैंड लीगली नोटिफाई किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि इन विच द गवर्नमेंट कैन होल्ड प्रोप्राइटरी राइट्स एंड वेयर यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज रेगुलेटेड टू बैलेंस कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल लोकल यूज। तो सेक्शन 19 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत यह डेफिनेशन दिया गया है। तो क्वेश्चन 38 देख रहे हैं इस वीडियो में, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अंडर द फॉरेस्ट लॉ? Prohibition on all activities, permission for all activities, prohibition on all activities which are not permitted, none of the above। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, prohibition on all activities which are not permitted। ऑप्शन ए क्यों नहीं? This description fits more with strictly protected area like a sanctuary or a national park, not a protected forest. In a protected forest, some activities are allowed under regulation। सेकंड क्यों नहीं? परमिशन फॉर ऑल एक्टिविटीज, दिस इज द अपोजिट ऑफ द लीगल मीनिंग। अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज नॉट ओपन फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज। एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑप्शन सी, प्रोहिबिशन ऑन ऑल एक्टिविटीज विच आर नॉट परमिटेड, करेक्ट। अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, a protected forest is one where all activities are prohibited unless they are specifically permitted by the state government. This means only notified or allowed activities can be carried out. None of the above. Incorrect. So under forest law, a protected forest means prohibition on all activities which are not expressly permitted by the authorities. A protected forest is an area of forest land or wasteland legally notified by the state government in which the government holds property rights and where use of forest resource is regulated to balance conservation with sustainable local use. Under section 29 of the Indian Forest Act 1927, the state government may declare any further forest land or wasteland that is not a reserved forest but is a government property or over which the government has proprietary right as a protected forest. These lands are not these lands are not notified in the official gazette. These lands are notified in the official gazette and are subjected to provisions allowing the government to regulate activities such as timber removal, grazing, or collection of forest produce. Key feature of this provision is that limited protection is there. It means कि protected forests are less restrictive than reserve forests, while reserve forests strictly prohibit activities like hunting, timber collection, unless explicitly allowed. Protected forests permit certain control activities for local communities under regulated conditions. State management. The government retains ownership and regulatory authority. It can make rules governing the cutting of trees, collection of forest resource, grazing, hunting, and other forestry operations. Community rights. Traditional community dependent on forest resources may exercise regulated rights for firewood, grazing, and minor forest produce, provided these activities do not significantly harm the forest ecosystem. Notification and survey. Before declaring a forest as protected, the state government typically inquires into existing rights of government and private parties. Pending inquiries, lands may still be declared protected so as not to infringe on existing rights. So some of the regulatory powers we'll discuss about here. So government can issue notification for reserving certain tree species or forest sections, restricting quarrying, lime burning, or cultivation, regulating removal and trade of forest produce, setting licenses for local or commercial utilization of timber and other resources,
penalizing violation with fines or imprisonment depending on the severity, distinction from other forest categories. So, a protected forest represents a balance between conservation and sustainable utilization of forest resources, with government ownership and regulatory oversight allowing control human activities. It enables local community to use forest resources responsibly while ensuring ecological protection, distinguishing it from the more restrictive reserved forest and the community managed villaged forests. तो हमने इस वीडियो में देखा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 133 हमने पहले ही देख चुका है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके जेपीसी सेक्शन में सारे वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड।